दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बीसीसीआई बहुत बड़ी गलती कर रही है। सलमान खान की नई फिल्म अनाउंस हो गई है। भाई के फैंस के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है। क्रिकेट सिर्फ एक मसाला होता है, एंटरटेनमेंट होता है, असली स्पोर्ट नहीं होता। Spent a great many years consciously, actively distancing myself from that part of myself. Basically, every poster is hairy, angry man covered in blood and holding an oversized weapon, like comically large weapon. I can't. It disturbs me at some deep inside part. और अब आते हैं उस सवाल पर जो आजकल बहुत चर्चा में है, आईपीएल की असली कीमत क्या है? When you are in a place of emotional or psychological crisis, it's as though you're in a house that is burning, and if you're running away from a house that's on fire, that is not bravery. That is just common sense. The Right Angle with Sonal Kalra. एक तरफ नंबर्स का गेम है जहां एक बॉल की कीमत जो है ना वो लाखों में है, और दूसरी तरफ है वो इंडस्ट्री जहां की हेडलाइंस जो है ना वो इमोशंस, अनाउंसमेंट्स और मोमेंट से बनती है। इस हफ्ते हमें दोनों एक्सट्रीम्स दिखे। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी सोनल कालरा। तो आज इन सब पे काफी लंबी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। सलमान खान की नई फिल्म अनाउंस हो गई है। भाई के फैंस के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है। सलमान खान ने तेलुगु प्रोड्यूसर दिल राजू और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर वामशी पैदीपल्ली के साथ अपनी नई फिल्म ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। फिल्म फिलहाल अनटाइटल्ड है, लेकिन सलमान ने सोशल मीडिया पे डाला है दिल दिमाग जिगर से अपने कैप्शन में। तो ये खबर उन्होंने शेयर कर दी है। फिल्म की शूटिंग जो है वो अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, और मेकर्स टारगेट कर रहे हैं ईद 2027 पे फिल्म को रिलीज करने के लिए। सोनम कपूर, जो अनिल कपूर की डॉटर जो है, और आनंद आहूजा ने 29 मार्च 2026 को अनाउंस किया कि उनका छोटा सा प्यारा सा दूसरा बेटा हो गया है। उनके बड़े बेटे का नाम वायु है और अब वो बड़ा भाई बन गया है। सोशल मीडिया पे इमोशनल पोस्ट डालकर अपने फैंस को ये गुड न्यूज़ दी सोनम कपूर ने, और बताया कि उनकी फैमिली अब कंप्लीट फील कर रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली IFFD 2026, जो कि डेब्यू था ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन दिल्ली, वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से इस हफ्ते हुआ, और उसकी ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी भी हुई 30 मार्च को, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेजेंट किए इस साल के अवार्ड्स, जो कि रणवीर सिंह को गया धुरंधर के लिए फॉर द बेस्ट एक्टर, और आदित्य धर को गया फॉर द बेस्ट डायरेक्टर अगेन फॉर धुरंधर। इस फेस्टिवल में शोले के 50 साल सेलिब्रेट किए गए। वेटरन फिल्म मेकर रमेश सिप्पी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑनर किया गया, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे अनुपम खेर, मनोज बाजपेयी, भूमि पेडनेकर, इन सब ने सेशंस लिए और मास्टर क्लासेस अरेंज की। सो फॉर द फिल्म लवर्स इन दिल्ली एंड ऑल्सो द एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स and students in Delhi, IIFD 2026 was quite a success. और अब हम आते हैं अपने सॉल्व सेगमेंट में। इस हफ्ते की शुरुआत ना एक बहुत ही मज़ेदार नोट पे हुई। बिजनेसमैन संजीव गोयनका, जो कि IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को ओन करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने जो IPL कितने ग्रैंड स्केल पे पहुंच गया और टीम्स की इतनी वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं, इसका क्रेडिट दे डाला ICC चेयरपर्सन जय शाह की विजन को। और इसी बात पे भड़क गए ललित मोदी, जो कि IPL के ओरिजिनल फाउंडर हैं। उनका रिप्लाई आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी इमोजी डाल के अपना रिएक्शन दिया। और अब क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन ने इंटरनेट पे एकदम हल्ला मचा दिया, तो हमने सोचा कि इस बार इस सेगमेंट में हम इसी टॉपिक को सॉल्व करते हैं कि आखिर इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो 2008 में जब से शुरू हुई थी से लेके 2026 में नंबर्स के तौर पर कितनी बढ़ गई है। तो पीछे चलिए, अप्रैल 2008 के उस बेंगलुरु स्टेडियम में माहौल में एक्साइटमेंट थी और डर भी था। कुछ लोग कह रहे थे कि T20 क्रिकेट सिर्फ एक मसाला होता है, एंटरटेनमेंट होता है, असली स्पोर्ट नहीं होता। इन्वेस्टर्स डर रहे थे, और किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट जिसको IPL कहा जा रहा है ये कैसे जाएगा। क्या आपको पता है कि पहला IPL ऑक्शन जो है वो कैसे हुआ था? अभी आजकल की तरह लाइव टेलीकास्ट वगैरह नहीं हुआ था। वो ऑक्शन बॉम्बे के एक होटल में दरवाज़ा बंद करके
किया गया था बिना किसी कैमरे के, बिल्कुल एक सीक्रेट डील की तरह। तब बीसीसीआई ने 8 टीम्स का जो टोटल बेस प्राइस है वो रखा था लगभग 1600 करोड़ रुपए। दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बीसीसीआई बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि इतना पैसा मांग रहे, इतना पैसा कौन देगा। लेकिन जब ऑक्शन खत्म हुआ तो सब हैरान हो गए, क्योंकि रिजल्ट निकला टोटल वैल्यूएशन का लगभग 2900 करोड़। अब आपको मैं हाल ही की एक न्यूज़ बताती हूँ। 2008 में बिजनेसमैन मनोज बादले ने राजस्थान रॉयल्स टीम जो है वो खरीदी थी सिर्फ 268 करोड़ में। तब लोग कहते थे कि इनके पास स्टार प्लेयर्स नहीं है, ये टीम सरवाइव नहीं करेगी। फास्ट फॉरवर्ड 2026, यही राजस्थान रॉयल्स की वैल्यूएशन जो है वो है 13,500 करोड़ रुपए, यानी 18 साल में लगभग 50 गुना से ज्यादा रिटर्न। आईपीएल कैसे एक सोने की खान बन गया है, इसका एक और पक्का सबूत मिला है मार्च 2026 में, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए। आरसीबी का एक माइनॉरिटी स्टेक सेल हुआ जिसने पूरी टीम की वैल्यूएशन को लगभग 16,600 करोड़ पे फिक्स कर दिया। याद कीजिए 2008 में आरसीबी सिर्फ 446 करोड़ की थी, आज वो 30 गुना से ज्यादा महंगी हो चुकी है। ये लेवल का जो आरओआई है ना, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पूरी दुनिया में शायद किसी और बिजनेस में नहीं मिलता होगा। अब बात करते हैं उस एनर्जी की जिसने आईपीएल की गाड़ी को इतना तेज भगाया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये जो नंबर्स है ना, ये आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। 2008 में सोनी ने 10 साल के लिए डील की थी लगभग 4,100 करोड़ रुपए में फॉर द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ आईपीएल। तब लोगों ने कहा था कि सोनी इतना पैसा कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन 2018 में जब स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ दिए सिर्फ 5 साल के लिए, तब दुनिया को समझ आया कि आईपीएल जो है वो एक्चुअली एक गोल्ड माइन है। और अब 2023 से 2027 की साइकिल में जो हुआ है वो हिस्टोरिक है। डिज्नी स्टार ने टीवी के लिए और वाईकॉम 18 ने डिजिटल के लिए मिलके लगभग दिए 48,390 करोड़ रुपीस। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आज 2026 में आईपीएल के एक मैच की जो कीमत है ना, वो लगभग 115 करोड़ रुपए है। यानी जब बॉलर एक बॉल फेंकता है तो उस एक बॉल की वैल्यूएशन जो है वो लगभग 50 लाख रुपए होती है। सोचिए, एक डॉट बॉल की कीमत एक लग्जूरियस फ्लैट के बराबर है। इस मामले में आईपीएल ने शायद इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है, और अब सिर्फ जो अमेरिका का नेशनल फुटबॉल लीग है ना, यानी एनएफएल, लगता है वही बच गया ब्रीच करना। लेकिन ये पैसा जो है ना, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से नहीं आता। स्पॉन्सरशिप का भी जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसकी भी बात सुन लो। 2008 में डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए साल के 40 करोड़ रुपए दिए थे। आज 2026 में टाटा ग्रुप साल के लगभग 500 करोड़ रुपए पे कर रहा है फॉर द स्पॉन्सरशिप। ये 1200% से ज़्यादा का जंप है। ब्रांड वैल्यू कहाँ पहुँच रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। पहले सिर्फ 4-5 बड़े ब्रांड्स आईपीएल से जुड़ना चाहते थे, आज 2026 में हर टीम के पास 15 से 20 पार्टनर्स या स्पॉन्सर्स होते हैं। उनके हेलमेट से लेके उनके सॉक्स तक हर जगह कोई ना कोई ब्रांड चिपका हुआ होता है। सेंट्रल पूल का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि बीसीसीआई मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप का 50% हिस्सा जो है वो टीम के साथ शेयर करती है आजकल। इसका रिजल्ट ये है कि आज 2026 में आईपीएल की हर एक टीम बिना कोई टिकट बेचे भी साल के शुरुआत में ही प्रॉफिट में होती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आजकल फाइनेंस की दुनिया में बहुत चर्चा में है, आईपीएल की असली कीमत क्या है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आईपीएल की ओवरऑल वैल्यूएशन को 1,58,000 करोड़ रुपए बताती है, जबकि कुछ इसे 84,000 करोड़ के आसपास भी मानते हैं। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? दरअसल 1.5 लाख करोड़ वो जो एंटरप्राइज वैल्यू है, जो तब कैलकुलेट की जाती है जब हम आईपीएल को एक ग्लोबल ब्रांड और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं। इसमें स्कैसिटी वैल्यू जुड़ी होती है, मतलब कि दुनिया में आईपीएल जैसी सिर्फ एक ही लीग है, इसलिए इसकी कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। वहीं दूसरी तरफ 84,000 करोड़ जो वैल्यू है वो इकोसिस्टम वैल्यू है, जो बेसिकली स्ट्रिक्टली आज का रेवेन्यू, कैश फ्लो और प्रॉफिट इन सब पर बेस्ड है। ये इसलिए है क्योंकि फैंस का क्रेज़ जो है वो अब सिर्फ स्टेडियम तक लिमिटेड नहीं है। डिजिटल व्यूअरशिप जो है आईपीएल की वो 100 करोड़ व्यूअर्स के मार्क को क्रॉस कर गई है। जियो सिनेमा और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ 3.2 करोड़ लोग लाइव होते हैं। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जितनी शायद ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की पूरी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। प्लेयर्स की किस्मत कैसे बदली है वो भी देख लीजिए। 2008 में एक टीम
टीम की जो टोटल सैलरी बजट था, यानी जिसको पर्स कहा जाता है टीम का, वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए होता था। आजकल 2026 में ये पर्स बढ़कर 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है पर टीम। 2008 में जो हाईएस्ट पेड प्लेयर थे उनको 6 करोड़ रुपए मिले थे, और आज 2026 में मिशेल स्टार या फिर जो नए डोमेस्टिक स्टार्स हैं उनको 25 से 30 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। एक एवरेज डोमेस्टिक प्लेयर जो 2008 में 10 से 20 लाख रुपए के लिए तरसता था, वो आज 2026 में 50 लाख से 2 करोड़ तक का बेस प्राइस लेके आता है ऑक्शन में। आईपीएल ने क्रिकेट को इंडिया में सबसे बड़ा करियर ऑप्शन बना दिया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2008 में आईपीएल का सीजन टिकट और हॉस्पिटैलिटी पैकेज जो है वो कुछ हज़ार रुपए में मिल जाता था। आज 2026 में मुंबई हो या बेंगलुरु के स्टेडियम्स में एक वीआईपी बॉक्स की कीमत जो है ना, वो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में कहीं पे होती है, और उन्हें खरीदने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की लाइन लगी हुई होती है। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि 18 साल में आईपीएल ने दिखा दिया है कि इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन नहीं है, पूरा कंप्लीट धंधा भी बन चुका है। 8 टीम से 10 टीम्स, 10 करोड़ व्यूअर्स से 100 करोड़ व्यूअर्स, और 2900 क्रॉस की लीग से 1.5 लाख करोड़ तक का सफ़र तय किया आईपीएल ने। आईपीएल के प्लेयर्स की किस्मत तो बदली ही है, स्पोर्ट्स का जो पूरा बिजनेस है उसका डीएनए भी बदल गया है। इसने दिखाया है कि अगर आप पैकेजिंग सही कर सकते हैं और फैंस को सही एक्सपीरियंस दे सकते हैं, देन स्काई इज़ द लिमिट। ये है मॉडर्न क्रिकेट की असली पावर। और अब हम आते हैं अपने रॉ फिल्म मोमेंट पे। एक तरफ जहां धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लियारी एरिया से भी एक काफ़ी अजीब सी डिमांड सामने आई है। वहाँ के जो लोकल्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने फिल्म के मेकर्स से 500 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है, ये कहते हुए कि धुरंधर जो है उसमें उनके इलाके को बैकड्रॉप की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए जो धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा लियारी की डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए मिलना चाहिए। उनका कहना है कि अगर मेकर्स ने उनकी ऑथेंटिक कहानी से इतना मुनाफा कमा लिया है, तो वहाँ के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए फ़ंड देना जो है वो धुरंधर के फिल्म मेकर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ये लोग जो ऐसे मुल्क का हिस्सा है जिसने इमोरल चीज़ों की फैक्ट्री लगा रखी है। इंडस ने तो पूरी तरह से खिल्ली उड़ा दी है इस खबर की, और जो कमेंट्स आ रहे हैं फ़नी, वो भी ज़रा आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और ऊपर से पाकिस्तान के मिनिस्टर नबील गबोल, जिनके ऊपर कहा जाता है कि राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है जमील जमाली उनके ऊपर बेस्ड है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि धुरंधर के जवाब में अब वो एक फिल्म बनाएंगे, लियारी का गब्बर। मतलब इसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास। अगर आपको हंसना है तो आप शो के बाद हंस लीजिएगा। इस हफ्ते हमें एक और रॉफल मोमेंट अल्ट्रा प्रो मैक्स मिल गया, क्योंकि हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हमने एआई के बारे में आपको कई दफ़ा बताया हुआ है, पर इस बार हमें एआई ने हंसा दिया। एक्चुअली हुआ ये कि वेटरन फिल्म मेकर सुभाष घई ने एक्स पर एक फ़ोटो डाली जिस पे उन्होंने लिखा कि ही इज़ वेरी वेरी फ्लैटर्ड, क्योंकि जो फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा में बीच पे सैंड के स्कल्पचर्स बनाते हैं, उन्होंने सुभाष घई को ट्रिब्यूट देते हुए सुभाष घई जी का सैंड स्कल्पचर बनाया। पर जो फोटो सुभाष घई ने उसके साथ डाली, 1 मिनट आप वो फोटो देखिए। मतलब सुभाष जी, आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये फोटो असली नहीं है। लोगों ने तो कहा ही कहा, लेकिन सुदर्शन पटनायक जो कि खुद स्कल्पचर हैं, उन्होंने फिर सुभाष जी की ट्वीट के ऊपर खुलासा किया बहुत ही पोलाइटली, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये सैंड आर्ट नहीं है। नमस्कार सुभाष घई जी, आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिसिएशन सर, आई एम अ बिग फैन, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to share that the scan sculpture appears to be AI generated and there may have been a small misunderstanding or some incorrect information. मतलब इसको देखने के बाद किसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली सैंड ऐसे कैसे खड़ी हो सकती है। तो सुभाष जी, आपने क्या सोचा? But anyway, it's a cute misunderstanding and it gave people a lot of reasons to laugh. और अब हम आते हैं अपने OTT मीटर सेक्शन में, जो कि हम ट्रैक करते हैं सी वोटर के साथ, जिसमें हम हर हफ्ते पैन इंडिया लेवल पे लोगों से पूछते हैं कि उन्हें OTT पे रिलीज़ हुई कोई नई सीरीज़ या फिल्म जो है वो कैसी लगी और उसके नंबर्स क्या थे। तो हम इस हफ्ते रिव्यू कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। द मूवी स्टार्स एकेडमी अवार्ड विनर सिलिन मर्फी, रेबेका फर्ग्यूसन, टिम रॉथ्स एंड अदर्स इन लीडिंग रोल्स। फिल्म जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 में सेट है। हमने जब लोगों से पता किया तो हमें ये समझ में आया कि फिल्म की बज़ जो है वो 82% थी। मतलब हर 100 लोग जिनसे हमने बात की उसमें से 82% को ये पता था कि ये फिल्म जो है ये नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप होने वाली है। मूवी को मिले एक डिसेंट कन्वर्जन रेट ऑफ 59%, दैट इज़ 59 out
out of 100 people, every 100 people that we spoke to had actually watched it. But अच्छे buzz और above average conversion के बाद भी मूवी की रेटिंग रही 2.78 out of 5. तो कुछ खास पसंद नहीं आई लोगों को. इस हफ्ते के सोनल रेकमेंड सेक्शन में मैं 2 फिल्मों के बारे में बता रही हूँ. पहली है Amazon प्राइम पे ब्लिंक ट्वाइस. इट्स अ थ्रिलर, 2024 की फिल्म है. इट्स अबाउट अ टेक बिलियनियर जो कि एक कॉकटेल वेट्रेस से मिलता है और फिर उनको अपने एक आइलैंड पे इनवाइट कर लेता है और फिर काफ़ी थ्रिलिंग जो मोमेंट्स हैं वो इस फिल्म में हैं. लोग इसे एप्स्टीन आइलैंड के साथ भी रिलेट कर रहे हैं, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट थ्रिलर टू वॉच. इट्स ऑन Amazon प्राइम एंड इट्स कॉल्ड ब्लिंक ट्वाइस. और एक और बहुत ही क्यूट सी फिल्म की रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, वो है नेटफ्लिक्स पे मेड इन कोरिया. तो अगर आपके घर में भी कोई जेन जी, जेन अल्फा वाला बच्चा है जिसको कोरिया से ऑब्सेशन है, जैसे मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो ऐसे बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए है फिल्म मेड इन कोरिया, विच इज़ अबाउट अ गर्ल जिसका एक ही सपना है कि वो कोरिया जाए और वहाँ जाके काम करे, और उसे वाकई में ये मौका मिल जाता है. लेकिन फिर वहाँ जाके उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में है ये फिल्म. बट इट्स अ वेरी slice of life, feel good, happy film. So you can watch it on Netflix. It's called Made in Korea. और अब हम आ गए अपने वेयर आर दे नाउ सेक्शन में. 80s का वो दौर याद कीजिए जब जंगल से एक लंबा चौड़ा नौजवान बड़े पर्दे पे आया था और रातों रात पूरे देश का टार्जन बन गया था. मैं बात कर रही हूँ हेमंत बिर्जे की. हेमंत बिर्जे की शुरुआत किसी फिल्मी सपने जैसी थी. उन्हें डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने स्पॉट किया था व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड. और 1985 में एडवेंचर्स ऑफ टार्जन फिल्म आई और उसमें उन्हें ब्रेक मिल गया. शुरुआत में ही उनका इतना बोलबाला था कि उन्हें एक साथ 100 फिल्मों की ऑफर हुई जो उन्होंने साइन भी कर ली. पर अफसोस इस बात का रहा कि वही उनका मसल मैन वाला अवतार जो है वही उनकी पहचान बन गया था और वही उन पे भारी पड़ गया. उन्होंने वीराना जो 1988 में थी, तहखाना और लश्कर जैसी हॉरर एक्शन फिल्म्स में काम किया. पर धीरे धीरे काम खत्म होने लगा और फिर उन्हें बी ग्रेड फिल्में और छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल्स पे गुजारा करना पड़ा. 2005 में सलमान खान ने उन्हें गर्व, प्राइड एंड ऑनर में एक रोल देकर सपोर्ट ज़रूर किया, पर करियर की गाड़ी जो है वो वैसी रफ्तार से नहीं चली जैसी 80s में थी. ज़िंदगी में असली मोड़ तब आया जब उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा. यहाँ तक कि मुंबई में उन्हें अपना घर तक खाली करने का नोटिस मिल गया था और वो रेंट भी नहीं भर पा रहे थे. इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में हेमंत बिर्जे का एक कार एक्सीडेंट हुआ मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे. तो टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी. उन्हें गाड़ी चलाते वक्त नींद आ गई थी एक्चुअली, इसलिए इस हादसे में वो और उनकी वाइफ अमाना, जिनको रेशमा भी कहा जाता है, वो काफ़ी जख्मी हुए. पर खुशकिस्मती से उनकी बेटी बिल्कुल सेफ रही. आज की बात करें तो हेमंत बिर्जे लाइमलाइट की चकाचौंध से काफ़ी दूर पुणे में अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही लो प्रोफाइल एग्जिस्टेंस जो है वो बिता रहे हैं. हालांकि वो अब भी सूर्या जो 2023 में आई और हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी स्मार्ट किलर, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कभी कभी नज़र आ जाते हैं. पर अब उनका पूरा फोकस जो है वो अपनी बेटी सोनिया बिर्जे के करियर पे है. सोनिया एक प्रोफेशनल डीजे हैं जो खुद को जंगल बेबी कहती हैं और एक्टिंग की दुनिया में वो काफ़ी कदम रख चुकी हैं. इतने उतार चढ़ाव के बाद हेमंत आज एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं. आप स्क्रीन पे देखिए कि अब हेमंत बिर्जे कैसे नजर आते हैं. आपको शायद वो टार्जन वाली फॉर्म में ही याद होंगे, बट दिस इज हाउ ही लुक्स राइट नाउ. और हम अपने इस 80s के टार्जन को बहुत सारी दुआएं देते हैं और हम कहते हैं कि उनकी लेगेसी जो है वो हमेशा जिंदा रहे. और अब हम आते हैं अपने कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में. आज के वक्त में कन्वर्टेबल ज्वेलरी का ट्रेंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बिकॉज मॉडर्न लग्जरी अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि यूटिलिटी और वर्सिटिलिटी के बारे में भी है. लोग अब ऐसे पीसेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा मौक़ों पर काम आ सके, जैसे कि एक हैवी ब्राइडल चोकर जो शादी के बाद डिटैच होकर एक सिंपल पेंडेंट या ब्रेसलेट बन जाता है. इस ट्रेंड को मल्टीपर्पज़ ज्वेलरी भी कहा जाता है, जहाँ एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको 2 या 3 अलग अलग टाइप के लुक्स मिल जाते हैं, जो कॉस्ट पर वियर के हिसाब से काफ़ी स्मार्ट मूव माना जाता है. डिज़ाइनर्स अब 3D प्रिंटिंग और हिडन हिंजेस का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ट्रांजिशन जो है फ्रॉम वन ज्वेलरी आइटम टू अनदर वो एकदम सीमलेस हो जा सके. कन्वर्टेबल ज्वेलरी जो है वो आजकल की जनरेशन के लिए काफ़ी सस्टेनेबल लग्जरी का एग्जाम्पल भी है. यू शुड ऑल्सो ट्राई इट आउट.
इस हफ्ते के ऑन कॉल विद सेगमेंट में हमने एक ऐसे एक्टर से बात की जो कि बहुत ज़्यादा पीक पे थे अपने करियर के, और वो चॉकलेट बॉय, लवर बॉय लुक्स में तो बहुत पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा पर्सनल डिसीजन लिया और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसके बाद बहुत साल बाद 2015 में उनकी लास्ट फिल्म आई थी। उसके बाद अब वो वापसी कर रहे हैं फिल्मी दुनिया में। मैं बात कर रही हूँ इमरान खान की। हाल ही में मैंने इमरान खान से काफ़ी हार्ट टू हार्ट चैट किया फॉर आवर ऑन कॉल विद सेगमेंट। अब आप देखिए। Hi Imran, welcome to the Right Angle. Hi, thank you so much for having me. Great to see you after all this time. Lovely to see you, Imran. And one's been waiting and itching to ask you this, that first of all, you've got to tell me, how was this break? I mean, this is your last release was in 2015, so like an 11-year break. What were you up to? Yeah. I felt it important to take a bit of time to understand and to connect with who I am outside of the public persona. The external persona of, an actor and a movie maker, that is one facet of my personality, but it's not the entirety of who I am. And I had started to feel like I was losing touch with, or not having, not in contact with the rest of me. Who am I outside of the public persona? And does that have value? Can I, for myself, have value as a person? Just even if I'm not an actor, if I don't make movies, who else am I? I found it necessary to reconnect with that, and to spend time just developing myself as a person. Well, Imran, there are people who'd kill to have that persona in the first place, and you did. I mean, you did have so much of success and adulation coming your way. I'm sure it must not have been an easy decision to give it all up and disappear. And so, therefore, was this thing of rediscovering yourself, was that there in the from the beginning in you, that quest कि कभी ऐसा time आ जाएगा मैं करूँगा ये? I guess I have always tried to look at the larger picture, tried to see myself also from a slightly zoomed out perspective. It's easy to get very, 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 very blinded and blinkered, and to only focus on the one or two steps directly in front of you. Uh, and I guess I would want to dispel the notion that it was a very difficult or scary thing. When you are in a place of emotional or psychological crisis, you are kind of functioning from a place of just survival. The analogy that I've used sometimes to describe it to people is, it's as though you're in a house that is burning, and if you're running away from a house that's on fire, that is not bravery. That is just common sense. Yeah. It's not a difficult decision. Like, bhai, this is all on fire. You run and you try to save yourself, save your life. But then, while you were away, and since it was a long time, were there moments where you'd switch on the television and something of yours would be coming up, a film, a song, and then you would think, "Yaar, वापस चलता हूँ." Like during these 11 years, like any regrets? मैंने क्यों कर लिया? अभी वापस जाना चाहिए? None whatsoever. Nay, I spent a great many years consciously, actively distancing myself from that part of myself. That's not me. That's a different person. I'm not that guy. I'm no longer that. I didn't try to hold on to any of the vestiges of that life. I didn't try to post on social media and stay relevant, or try to show up at places. These are the things that one does when one is trying to cling on to some past glory. I severed all of those ties. Anyone who reached out to me from the industry, be it to read a script, be it the media who would say, "Hey, will you give us an interview?" I would say, "No, I'm not that person. You want to talk to a different guy. I'm no longer that guy." So I was saying, yeah, there was never any regret about that. It was very, very clear that no, I am starting an entirely new chapter, and reshaping the narrative within my own head from the ground up. And it is kind of only through spending that many years away from it and understanding, okay, what is it about movies and the making of movies that I truly appreciate and that I truly, truly value, that I'm now able to slowly reconnect
and say, okay, these are the parts that I believe have true value Hmm. for me. So I now I can connect, I think, in a more authentic and truthful way. Wow. Okay. And so what was the moment when this reconnection happened, and what was that moment like when you decided, all right, I'm going back? It was the internet. In the last couple of years, all of these memes started popping up about, where is Imran? Life was good when Imran used to make romantic comedies. And because I don't do social media, I don't have Instagram on my phone. I don't follow. I don't consume it. Uh, I wasn't actively aware of it, but my friends started sending me memes saying, "Hey, have you seen this? You're in a meme." And within that, somewhere enough voices started coming through that I kind of felt like, okay, I'll just stick my head out and let everyone know I am alive, I'm doing good, thanks for checking, that sort of thing. And it is as I started to hear from people on social media who were talking about their appreciation for some of my films that it kind of started to stir that creative part of me, saying, oh, you know what, I would like to tell more stories. I'd like to connect with people a little more. So yeah, it was the internet that called me back. Well, I must tell you, Imran, that while your friends may have partially been able to convey to you the sentiments that people felt once you were not around, there was much, much more of it. And someday, if you'll get a chance to sit back and see all the stuff that got written about where you were and how keenly were people waiting for you to come back, it'll give you some moments of happiness. But at the same time, internet at the time when you left is not the same as what it is now. I mean, good that you're not there on Instagram, because it would have disappointed you to see that there is also a lot of negativity, a lot of negativity that's crept into the medium. So now that Totally. you're back, is this decision of not being on Instagram, not being on social media, would it continue, or would you come back in the full form into the groove? No, I think that while it's a useful tool for a public person to communicate, uh, to be a consistent user of it, I think is problematic. Uh, we have enough understanding at this point. Enough and more has been disclosed about the intentionally manipulative practices that the architects of social media have built into their systems. They want to keep you addicted. It is a digital drug. They want to poke at your insecurity. They want for you to feel low. So I don't want to be a consumer of that. It's just not good for. It's not good for me. It's not good for anyone. Fair enough. And Imran, you mentioned rom-coms. Now, the thing is that in the past few years, especially since COVID, actually, people have started to think that all that works for theaters is larger than life, very intense, sometimes really violent. That kind of cinema, which kind of gives you a very larger than life experience. People have, in fact, been saying that rom-coms, etc., would be relegated to OTTs. But since you believe in the genre, do you think rom-coms are going to make a comeback? And you've decided for that to be a comeback vehicle. So where does this conviction of slice of life, feel-good films come from? I think it's important to separate the creative process of movie making from the commercial. We're becoming more and more enamored with numbers and with the box office, to the point that from media to audience, everyone is sitting down with little spreadsheets and calculators, and tracking box office as though it's a sport. Like this the like statistics of your favorite sports team. And I guess it's interesting for people who are excited by data. It means nothing to me. Uh, you're right. I certainly there has been a global trend in audiences kind of moving away from cinemas and really only showing up for large scale spectacle event movies. Uh, and I don't particularly see
I don't see anything wrong with that. It's audience tastes, uh, and I think that where we are today, the fact that the audience has so many options for entertainment and so many conduits via which they may receive a movie or a show or a cartoon, whatever your interest is. I think that the idea of being an entertainment behemoth, where one point of entertainment dominates the cultural discourse, I think those days are behind us now. So it is important when you're making a film to consider whom am I making this film? Yeah. Where, where is the audience that will be interested in this story? So the film that we are making is a Netflix original. It's for Netflix. Because from right from the get go, we had never considered that this is the kind of narrative that would appeal to a mass audience. It's not a massy theatrical experience film. It's a gentle relationship story. I like it. I think it's delightful. I don't think that it's the sort of thing that will have theaters packed and people cheering. Yeah, no, but I'm sure delightful is the word that you've used, and that's the word that people actually look forward to when they look at your comeback. So, what is it about this script? It's called Adhure Hum Adhure Tum. Adhure hum adhure tum. And what is it about? What's the one thing about this that made you say yes to this as your comeback vehicle, like a full on? You did a cameo in the interim, but what is it about Adhure Hum Yes. Adhure Tum? Well, rather than a project that I said yes to. This is a project that I assembled. Uh, I wanted to make a story. I wanted to revisit the romantic comedy genre, uh, but through the lens of where I am today. I'm 43 years old now. I'm a father to an almost 12-year-old. I'm divorced. I've kind of lived a whole bit of life, and I felt like I wanted to make a film that looked at romance and relationship and all of that, but also through the lens of where I am today in my own life. So I teamed up with Danish Aslam, with whom I had made Break Ke Baad 15 years ago. And because he's a close friend, our sensibilities are closely aligned, we kind of co-developed the project. So this is very much, shall we say, an artistic expression from my side, rather than me being coaxed into a film. It was me saying, "Hey, here's the story that I want to share with everyone." Right. Well, one is really looking forward to it, Imran. And with Delhi Belly, you'd also shown another side of you, because Jaane Tum Ya Jaane Na Ke Baat to there was a hunger for more of such films. But with Delhi Belly, you showed a very edgy thriller kind of side too. So, do we hope to see you stick to the rom-com genre for a while, or would we hope to see you in diverse projects? I rather than looking at films through the from the perspective of a genre, I am. Let's put it this way. I'm not into action. I find myself. This is just kind of where I'm at in my life, where what my own life experiences have brought me to. I'm not excited by violence, and I find myself quite disturbed by it. So I don't feel like I want to tell those stories, and I don't find that there's anything that's really emotionally engaging for me in those kinds of narratives. So what I really want to tell are human stories, kind of simpler, more intimate human stories. Sure, maybe it's a drama, maybe it's maybe one looks at thriller, but always about humanity rather than action. Got it. Imran, I'm trying to recollect my previous conversations with you and what I sense, and you've always been a very articulate, well-thinking, intelligent guy, but I sense a tehrav, for want of a better word, because maybe what time has done and what this hiatus has done for you is it's given you a certain sense of, slowing down and sort of taking things at your own pace. So, in terms Yep. of a spiritual evolution, in terms of being more mature, what is that one thing that you've gained in these last 11 years? Your use of the word "herav," I guess, is most appropriate.
Uh, when one is younger, one tends to be perhaps a little more anxious, a little more uncertain. What am I doing? Am I doing the right thing? Should I do this? One has a lot more questions and maybe not a great deal of certainty. You have questions, and maybe the environment around you will also put more of those on you. Hey, you shouldn't do this. This is bad for you. You should do that. That's very good. Uh, and the past few years for me have really given me the confidence and the therav within myself to hold on to that and say, hey, listen, who knows what is right and wrong? What I can say is this feels correct to me, and just because it feels correct to me, I will follow this with my own belief. You may disagree, you may dislike. That's okay. That's your take. Here's my take, and I will follow my path. Right. And That but feeling, the sense of not needing an external validation, and not being afraid of of consequence. To say I'll take the consequence because I'm playing it my way. well, this it's a very interesting point about not needing external validation, because it is at the end of the day a very competitive industry to be in. Around the time during your last stint, there was a lot of chatter about competition with, let's say, Ranbir Kapoor. You guys were around at the same time, joined the industry. Now that you're back in your second stint, do you see yourself not wanting to be a part of being compared with any other fellow actor competing for a project? The usual stuff. Yeah, I had never, for myself, I had never bought into the notion of creative competition. Uh, it again reduces cinema and our art form into some kind of a competitive sport, and I don't see that as doing full justice to the films that we make. Someone may be emotionally moved by a film, someone may not. That's fine, but measuring it as a metric of numbers, I've never bought into that. I don't really subscribe to that. So even now, to me, just the fact that from time to time I will be granted the opportunity to make a movie. How many of us, how many people out there dream of making films, of being a part of a movie? Uh, for me, every time that I get the opportunity to do that is a win. Because there are people out there who would want to make a film and will never get the chance. Yeah. So to me, I see this as just a great privilege, which then gets repeated and repeated. You get to dabble in the art which you love so much, and you get to take a story and kind of put it out to someone out there. That's winning. It's already winning. Yeah. Imran, sorry, I'm taking you back to that period while you were away, and I understand that you were not a part of the social media scene, but were you consuming film content, Indian Hindi film content? And if you were, then what is that one film or maybe a couple of films that you saw which gave you the urge to want to come back? No, I had made a very conscious decision to disconnect from the Indian film scene. I kind of immersed myself in classic cinema, Indian and global. I've For the past, I guess, 6 or 7 years, I've been diving deep into classics, either stuff that I have loved through life, or those films from the olden days, which one has heard this is a very great film, but you haven't actually seen it. You think I should watch that film? I started watching those films. To me, it was like going back to film school. It was discovering why these great artists are so revered today. It was discovering why these classics of cinema were and are still considered classics. So yeah, for me, it was about going back to the roots and rediscovering the love and the joy. Amazing. That does sound like a time well spent, but kuch aisa, one thing that you missed in these 11 years, maybe I'm pushing it too hard, but it doesn't seem like you missed I, anything. no, absolutely. I miss the process of doing the work. I Ah, love to be on movie sets.
I love working with directors and cinematographers and sound recordists and production designers. I love the environment on set. It's this wonderfully collaborative atmosphere, where, 80, 90, 130 people are getting together and everyone is putting their shoulder to the cart and pushing the cart forward, all of us together. You can't do it without the rest of these people. True. I might show up and start acting, but if they're not pointing the camera at me, my work is worthless. If the production designer have not brought their part, the guy who's hiding just underneath the frame holding a bounce board to fill the light, the guy who's standing over there with a fan trying to send wind so that the smoke goes, all of these people are teammates and they are supporting this thing that we're making. It's such a beautiful environment. That's what I love the most, and that's what I missed. Amazing. And Imran, now that you're back, are there any directors and co-actors that are on your wish list that you would now want to collaborate with? I've not been closely following. I'm aware of what is out there. I've not been watching a lot of recent films. Frankly, the recent pivot, it's not that recent even, but the pivot towards this massively heightened violent cinema. It's a genre which I call the one angry hairy man covered in blood. Oh, Basically, every poster is hairy angry man covered in blood and holding an oversized weapon, like a comically large weapon. Uh, I can't. It disturbs me at some deep inside part. fair enough. I was That's talking that's to, that's that's why sorry, I felt like I had to make this film. yeah. Our film came about as kind of a conscious response and counter to what I see as an entirely underrepresented uh, a palette of emotions. There's empathy, gentleness, kindness, dignity. These sorts of emotions I feel are underrepresented today in our films. Well, so true. And actually, in your absence, I mean, from your family, Amir's been doing his bit at least to have that empathy, kindness. I mean, if one would see Sitare Zameen Par, I don't know if you've watched it yet, Yeah, but those I did watch that one. Yeah. those are the emotions. You can't skip the family films. So true. Those are the emotions that one longs for, apart from all other kind of cinema, of course. So I'm really hoping that that works in your favor and the conviction with which you're doing this. I was speaking to Bhumi the other day for this show itself, and Bhumi mentioned you as one of the people in her bucket list, in her wish list, who she wanted to work with, and she was so happy that that kind of would come through. That's why I thought I'll check with you on any co-actors that you've really enjoyed watching and would like to now collaborate with. Bhumi was kind of at the top of our list as Danish and I started developing Athure Hum. Uh, we had a couple of brief conversations around a couple of other names, but fairly quickly we kind of zeroed in on, we like Bhumi. I think she's been doing great work starting with her first film, uh, and she was someone who we really saw as fitting ideally into the world that we wanted to create. So we pretty actively pursued her even when we didn't have a full bound script, which is a little embarrassing to admit as these things go. But you know how projects often start moving before all the pieces are in place. So there was a couple of months of Danish and I chasing her with loose sheets of paper, like, look, your character will be like this, and we'll write a scene that's kind of like this. But yeah, we finally got her on board. It was lovely to have her. Yeah, totally. And that brings me to my last question, Imran. And that's also something that Bhumi and I discussed, because she's also, in a very smaller measure, took a break because she felt a burnout and she, decided to travel. And you've taken a much larger break. And I'm not sure if I should call it burnout. It was a very conscious decision that you took. But if It's not an somebody, inaccurate description. if Yeah, it's somebody not an inaccurate description. it's not okay. If somebody were to take a leaf out of your learnings and feels at at whatever they may be doing, but they may be at a point in life where they
decide to give it all up and sort of take a break for the sake of their own mental health, for the sake of their own well-being, what is the advice that you would give to such people? Because it's not always an easy decision. It's never an easy decision, actually. Certainly, it is never easy. I was able to take this choice sitting very prettily on top of a great mountain of privileges. I as a person from a film family, I had doors opened for me very early on that maybe would not have been open for others. I was lucky enough to work in enough movies where they paid me generously enough that by the time I was 30, I had a financial security that is uncommon for most people out there. So I was able to make choices that maybe not that might not have been available to anyone else. That being said, there are, I think that most anyone who has worked in the industry, worked in the movie business for in any reasonable amount of time, would also probably find themselves in a place of financial security. What comes next is being able to take a step back from that and say, this is enough. I may always crave more, but I don't need more. Yeah. I have enough from here. Now, what else do I value? Where else can I derive value from? The idea that someone who is a much bigger star than me, much wealthier than I am, might still feel compelled to show up at an event or cut a ribbon or do a thing because whatever it's work, rather than being able to say, hey, listen, I don't need this. I don't have to do that. To be able to give up that fear, the fear that you are missing out on something, to act without fear. That is the tougher step. Yeah. Completely. I just hope that people find that courage and also that sensibility which you used when you mentioned finances, which should help them, evaluate their situation and take such a decision. But great advice there, Imran. And thank you so much for taking out the time to talk to me and being on the show. I'm telling you with a lot of conviction that people are ready to lap you up and can't wait to see you come back in full form. And I hope that this stint of yours turns out to be a much more enriching and fruitful and happy experience for you, which is what you want to give to your audience. Thank you, Imran, and God bless you and all the very best for Adhure Hum Adhure Tum. Thank you so much. Wonderful to see you. And with this, we come to the end of this week's episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप please अपना feedback मुझे देना मत भूलिएगा. You can write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com. नहीं तो आप नीचे अपने comment section, यहाँ के comment section में भी अपना feedback दे सकते हैं. और जिनके सबसे अच्छे comments होंगे, उन्हें हम अपने दिल्ली के स्टूडियो में बुलाएंगे because हमारे यहाँ अक्सर stars आते रहते हैं. For a property called Stars in the City, which I host. तो अभी हाल ही में आने वाले हैं अक्षय कुमार, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, वामिका गाबी. आपको इनमें से किसी से भी मिलना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए and you could be the lucky one. I'll see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. ठीक है? हाल ही में. Well, this is it for this week. We'll be back next week. ये मैं क्यों बोलूँ, खत्म थोड़ा हो रहा है एपिसोड. हम experienced actor बन चुके हैं. मैं इतना सारा बकवास नहीं बोलने वाली हूँ. नहीं, मुझे शुरुआत बहुत ही बकवास थी, लेकिन ना सेकंड हाफ में मैंने म्यूट करके देखी. सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा हंसी. पर GHAI तो है. जब नीरज सेट हो जाए तो बताइए.